एंड्रॉयड बोर्ड SP36811.2 येलो इंडिकेटर पे है। पिक्चर नहीं है, चेक कर लेते हैं फॉल्ट क्या है। स्टैंड बाई 5 वोल्ट इज ओके, स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट इज ओके। एंड्रॉयड बोर्ड प्रोसेसर की रैम सप्लाई 1.5 वोल्ट ओके है। एंड्रॉयड कोड सप्लाई 1 वोल्ट इज ओके। एंड्रॉयड प्रोसेसर की एंड्रॉयड फंक्शन कोर सप्लाई 1 वोल्ट is okay. 1.8 volt supply for eMMC VCCQ is okay. eMMC VCC supply 3.3 volt is okay. Ticon on 12 volt is not coming out. You can see there 12 volt is not coming out. So it is clear except Ticon VCC 12 volt. All the voltage are coming out. That means the problem is in between eMMC IC and processor. Now I first need to remove the eMMC IC and program it with OK software. Now I need to fix the eMMC IC on the board. Now let's check the board whether it is working or not. Now you can see red light is glowing after powering on via remote. It goes to yellow. Now this board is on. You can see Android TV is written here and it will start after this function.